A very good morning to my dear students. Today I am going to teach you a noun. You know what a noun is? Everything around us has a name. Everything around us is a noun. क्योंकि जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका नेम होता है कोई ना कोई. तो noun is a naming word. Noun is the name of a person, animal. Noun is the name of a place. Noun is the name of a thing. Now, name of a person: girl is a person, teacher is a person, boy is a person. Noun is an animal, name of an animal: dog is an animal, monkey is an animal, elephant is an animal. Noun is a name of a place also: school is a name of a place, farm is a name of a place, zoo is a name of a place. Noun is a name of a thing also: ball is a name of a thing, truck is a name of a thing, nut is a name of a thing. Now, you understand now what is noun? Noun is a name of person, place, animal or a thing. Is called noun. Name of a person, place, animal or a thing. Now we will discuss kinds of noun. There are 5 kinds of noun. First is proper noun, common noun, then abstract noun, material noun and collective noun. Now we will discuss each and every kind one by one. First is proper noun and common noun. Proper noun is I am a special name. किसी का proper name, special name of a person, place, animal or a thing. I am a common name. Common name is a common name of a person, place, animal or a thing. Again I will repeat. Proper noun is a special name of a person, place, animal or a thing. Common noun is a common name of a person, place, animal or a thing. I will clear you with an example. The girl entered the room. Next line, in the next line, Anu entered the room. In the first line, girl is a common name, Anu is a proper name, because girl is a name of a whole class of a girl. Anu can be a girl, Manjeet can be a girl, Ila can be a girl. There are different names of a girl, but girl is a common noun, Anu is a proper noun. Similarly, next, boy is a common noun, Ram is a proper noun. Boy is the name of any boy, Ram is the name of a particular boy. Ram is a name, Sham is a name of a boy, Rahul is a name of boy, Aditya is a name of boy. There are so many names. Name of a particular person is a proper noun, name of a common class is a common noun. Now next is city is a common noun. There are so many cities in our country, in the whole of the world. Agra is the name of a proper city. There is no any other city. There is only one city, Agra. Agra is the name of a particular city. So, I hope all of you understand this difference between proper and common noun. Common noun is the name for a person, place, animal or a thing. Proper noun is the special name of a person, place, animal or a thing. Now, next kind is abstract noun. Abstract noun gives us an idea, feeling or thing you can't touch. जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उनका आइडिया ले सकते हैं, वो कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. थिंग को, प्लेस को, किसी भी चीज़ को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. वो कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे लव को हम फील कर सकते हैं, लव को हम टच नहीं कर सकते. हैप्पीनेस है, उसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. सिमिलरली फियर है, डर को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं. नेम ऑफ अ मंथ जो है अक्टूबर, इसको हम फील कर सकते हैं, हाँ अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, टच नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मेटल और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ. जिन चीज़ों से चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन. जैसे सिल्वर, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर, यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ सिल्वर. ऑर्नामेंट इज अ कॉमन नाउन, whereas silver is a material noun. Iron fan is made of iron. Fan is a common noun, iron is a material noun. Furniture is made of wood. Furniture is a common noun,
and wood is a material noun. Things which are made up of is a material noun. Now next is collective noun. What is collective noun? Collective noun, the word used to name a group of people, animal or a thing. Group of people, name noun तो आपने पढ़ा, noun is a name of person, place, animal और a thing. अब उसकी जो काइंड्स है वो अलग अलग, वो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के आसपास ही. अब कलेक्टिव नाउन जो है, जो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का ग्रुप है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे थिंग है बुके, बुके इज़ अ थिंग. ग्रुप ऑफ, बुके किसका, ग्रुप ऑफ बंच ऑफ फ्लावर जो हम लाते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स जिसमें इकट्ठे किए होते हैं उसको हम बुके बोलते हैं. कॉलोनी, अलग अलग आंट को, जब आंट्स इकट्ठे एक जगह पे देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनी ऑफ आंट्स. क्वायर, ग्रुप ऑफ सिंगर्स जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वायर. फ्लॉक ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ शीप जो होती है, जो भी ग्रुप होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. शीप इज़ अ कॉमन नाउन, फ्लॉक इज़ अ collective noun, colony is a collective noun, ant is a common noun, square is a collective noun, singer is a common noun. Similarly, herd of cows, herd is a collective noun. Orchard of trees, orchard is a collective noun, trees is a common noun. Shoal of fish, fish is a common noun, whereas shoal is a collective noun. I hope all of you understand the meaning of what noun is. Noun is the name of person, place, animal or a thing.